Assalamu alaikum dear students. How are you? Welcome back to Maths Made Easy with Iram Sima. लास्ट लेसन में लेसन 2 में हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेसन में जो कि लेसन 3 है क्लास 8 का, उसमें हम पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं हम आज के लेसन का। सबसे पहले हमारे पास है सबसेट। लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ every element of set A is the element of set B, then A is called subset of B. Subset is denoted by, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स में हम करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक सेट है ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2 and 4 and set B contains of the elements 1, 2, 3, 4 and 5. Here you see that every element of set A is present in set B. 1 is present in B, 2 is also present in set B, 4 is also present in set B. So we can say that A is the subset of B, and we will write it like A is the subset of B. A is the subset of B. Now in examples, if we have a set A in which we have the elements 1, 2 and 4, and in set B we have the elements 1, 2, 3, 4 and 5. Here you see that all the elements of set A are present in set B. 1 is also present in B, 2 is present in B, 4 is also present in set B. So we can say that A is the subset of B. We denote like A is the subset of B. Next is proper subset. Set A is said to be a proper subset of B if at least one element of set B is not included in set A. Then we can say that A is the proper subset of B. Proper subset is denoted by this symbol. Example, if A is the set contains on the element x, y, z, and B is the set which has the element w, v, w, x, y, and z. Here you see that all the elements of A are present in B, x, y, z, but two elements of B are not present in A. ए के तो तमाम एलिमेंट्स हमारे पास बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के दो एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है। इस कंडीशन में हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट वी हैव improper subset. If all the elements of set A are in set B and there is no such element in B which does not exist in A, then A is called the improper subset of B. यानी कि हमारे पास सेट A में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे B में मौजूद हैं और B का कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि A में मौजूद ना हो। तो इस कंडीशन में A B का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 and B also contains the same elements 2, 4 and 6.
Here you see that all the elements of set A are present in B. A के सारे elements B में मौजूद हैं, but in B we don't have any such element which is not present in A. तो इस कंडीशन में हम कहेंगे A is the subset of B and B is the subset of A, means that A is an improper subset of B. इस कंडीशन में हमारे पास A एक improper subset of B कहलाएगा. Next हमारे पास है power set. A set that contains all possible subset of a given set is called the power set of that set. Means कि आपको एक set given है और आप उसके तमाम possible subsets find out कर लेते हैं, तो जो power set है that contains all those subset which you have find it out of the given set. तो इसको हम एग्जांपल से करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा. तो ये इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A के साथ. तो एग्जांपल हम देख लेते हैं. A इक्वल्स टू ABC. हमारे पास A के कोई से 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C. इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट इज नल सेट A, B, C, AB, AC, BC एंड ABC. ये सारे के सारे तमाम पॉसिबल सबसेट्स हैं ऑफ द गिवन सेट A. अब पावर सेट क्या है? पावर सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट A. तो ये सारे के सारे जितने भी हमने 8 पॉसिबल सबसेट्स थे गिवन सेट के, वो हमने पावर सेट के एलिमेंट्स के तौर पे यहाँ पे लिख लिए हैं. पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 2 raised to power n. एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A equals 2 raised to power n, where n is the number of the elements of the given set. जो A है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास A के जो एलिमेंट्स की तादाद है 1, 2, 3. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 raised to power 3. जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास 8 आता है. अगर आप इसको काउंट करें ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट A, तो उनकी तादाद भी 8 बनती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. तो उनकी तादाद भी हमारे पास क्या है? 8 है. इसके साथ ही आज का लेसन खत्म होता है. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे लेसन मिलते रहें. इसके साथ ही इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.